So as discussed in previous video, if you have not huge money to invest in real estate and also you have not enough time and knowledge to invest in share market, then mutual fund is the best option for you because you can invest in mutual fund with minimum amount and do not need any extra time and knowledge. Mutual fund is that investment where experts work for you to grow your money. They invest in stock market on behalf of you. That's why mutual fund investment is the best and effective way to put your money to grow. So friends, अभी तक हमने अपने वीडियोस में दो पॉइंट्स मेनली डिस्कस किए हैं. नंबर 1, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट, एंड नंबर 2, वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट. Now we'll discuss in detail about mutual funds, that is how to invest in mutual funds, what are the steps to take care while investing, and what are the different categories of mutual funds, and कौन सी categories के अंदर कितना रिस्क एसोसिएटेड है और कौन कौन सी कैटेगरीज किन लोगों के लिए सूटेबल है. Broadly, mutual funds are divided into two categories. Number 1, equity mutual fund. Number 2, debt mutual fund. Equity mutual fund में major portion of money is invested in equity and equity related instruments. And in debt mutual fund invest in debt instruments, money market instrument, government bonds, corporate bonds, commercial papers, government and corporate debt securities, treasury bills, certificate of deposits. Generally, debt mutual funds are used to park the money, get the safe and secure return, capital protection. If someone invests in debt mutual funds, then he will get good return as compared to FD due to inflation benefits. Further, debt mutual funds can be categorized according to the tenure of the securities held and on the basis of the issuers of the securities. Number 1, overnight funds. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ओवरनाइट फंड्स के अंदर मनी इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 1 day. And number 2, liquid funds. In this fund, money is invested in debt and money market instruments with maturity up to 91 days. And the next is the ultra short duration funds. इस फंड के अंदर उन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मेच्योरिटी पीरियड 3 मंथ टू 6 मंथ के अंदर आता है. नेक्स्ट, लो ड्यूरेशन फंड्स. इसके अंदर जो सिक्योरिटीज कंसिडर की जाती हैं वो 6 मंथ टू 12 मंथ वाली सिक्योरिटीज कंसिडर की जाती हैं. एंड नेक्स्ट आ जाता है मनी मार्केट फंड्स. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो मेच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं वो अप टू 1 year हॉरिजन के कंसिडर किए जाते हैं. नेक्स्ट इज द शॉर्ट ड्यूरेशन फंड. इन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो कंसिडर किए जाते हैं जिनकी मेच्योरिटी विद इन 1 year to 3 years के बीच में होती है. एंड नेक्स्ट इज द मीडियम ड्यूरेशन फंड वेयर सिक्योरिटीज मेच्योरिटी पीरियड कंसिडर फ्रॉम 3 year to 4 years. And next is the medium to long duration funds where the security maturity is 4 year to 7 years. And long duration के अंदर the securities maturity is more than 7 years. And next one is the dynamic bond fund. Dynamic bond fund के अंदर across durations investment की जाती है. नेक्स्ट इज कारपोरेट बॉन्ड्स. कारपोरेट बॉन्ड्स के अंदर मिनिमम 80% कारपोरेट बॉन्ड्स के अंदर हाई रेटेड कारपोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क फंड्स. क्रेडिट रिस्क फंड्स के अंदर मिनिमम 65% इन कारपोरेट बॉन्ड्स के अंदर कंसिडर किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, बट ये लो क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज होती हैं. नेक्स्ट वन इज बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स. बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स के अंदर मिनिमम 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है. गिल्ड फंड्स के अंदर मिनिमम 80% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है.
and the last one is floated funds, where minimum 65% is invested in floated rate instruments. तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है हाइब्रिड फंड्स. हाइब्रिड फंड्स is the combination of equity mutual funds and debt mutual funds. ये according to the combination of investment ratios of debt and equities, ये तकरीबन 5-6 कैटेगरीज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं. सो वी विल फर्दर डिस्कस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.